Many students ask the question how they can score 7 in speaking, 7, 7.5, or even 8 or more than 8. What to say? How to answer the questions? क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से दे कि उनका स्कोर 7, 7.5, 8 और इवन मोर देन 8 आ जाए. एंड सम ऑफ देम आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. उनमें से कई तो बोल बहुत अच्छा लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से. So I am going to share with you a strategy. मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं. एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी टू आंसर ए क्वेश्चन, you will definitely be able to score better than your current position is. For example, if you are at 6, you would get 6.5 or 7. If you are at 7, you would be able to get 7.5 or 8. What is that? Actually, we can answer a question in 3 ways. There are 3-step formula. 1. When a question is asked, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास 3 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, 3 अप्रोचेज हो सकते हैं जो आप अपना सकते हो. Especially when the question is asked in yes or no. So you can say yes, you can say no, or you can be diplomatic. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको हाँ में आंसर देके, उसके रीजंस देके और उसका एग्जाम्पल दे सकते हो. पर ये तब करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इसका आंसर यस ही होगा, इसका आंसर नो नहीं हो सकता, या फिर इसका आंसर डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता. सिर्फ उसी कंडीशन में हाँ बोलिए, उसके रीजंस दीजिए और उसका एग्जाम्पल कोट कीजिए. सेम इज विद द नो. सेम इज विद द नो. यही बात नो के साथ है. अगर आपको लगता है कि इसका आंसर नो ही हो सकता है, इसका यस तो हो ही नहीं सकता, या फिर इसका डिप्लोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, द सेम अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड. यही अप्रोच यहां पे आप नो बोल दीजिए, फिर उसके रीजंस दे दीजिए. रीजन एक हो सकता है, 2 हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल दे दीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए. पर अगर आपको लगता है कि इफ आई से यस, द आंसर वुड नॉट बी कंप्लीटली ट्रू, आंसर पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि उसके दूसरी साइड में भी बहुत कुछ है. और सेम अगर आप नो कहते हैं तो आपको लगता है कि आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि उसके अपोजिट, उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं. सो देन यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन डिप्लोमेटिकली. तो डिप्लोमेटिकली आंसर देने का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आंसरिंग ए क्वेश्चन डिप्लोमेटिकली? उसके 3 या 4 फायदे हैं. फर्स्ट, जो सबसे बड़ा फायदा है, you would be able to speak at length. डिप्लोमेटिकली में हम दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करते हैं, हाँ वाले को भी और ना वाले को भी, और फिर अपना ओपिनियन देते हैं.
इसका मतलब है यू वुड बी एबल टू स्पीक मोर। आई वुड गिव यू एग्जाम्पल। मैं आपको दोनों के हाँ का आंसर भी एक ही क्वेश्चन लूंगा। एक क्वेश्चन का आंसर पहले मैं आपको हाँ में उसका आंसर देके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको उसका आंसर ना में देके दिखाऊंगा, और फिर मैं उसका आंसर डिप्लोमेटिकली देख के दिखाऊंगा। और आप खुद जज करना कि इन तीनों में से कौन सा आंसर सबसे अच्छा है और किस आंसर को सबसे ज्यादा बैंड स्कोर मिल सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड ऑफ योर ओन। So first you would be able to speak at length, you would get better band score, and definitely it would boost your confidence. इससे आपका confidence भी boost होगा, and examiner would have no doubt about your caliber. एग्जामिनर को आपके कैलिबर के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग ऑल साइड्स ऑफ द आंसर। आप आंसर की सारी साइड्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो। इट विल प्रूव योर मेटल, इट विल प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो एग्जाम्पल लेते हैं। आई जस्ट गिव दिस एग्जाम्पल। ओके, इफ यू आर आस्क्ड, are children allowed to use cell phones in India? Are children allowed to use cell phones in India? क्या बच्चों को इंडिया में सेल फोन का यूज करने की इजाजत दी जाती है? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। अगर आप इसका आंसर हाँ में देते हैं, इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन इन यस, व्हाट वुड यू से? यस, children are allowed to use cell phones in India. Most of the children give their mobile phones to their children, and they can use them, they can play games and make calls if they want to. When I was young, I often had mobile phones of my parents and played video games on my mobile games on them, and I had a lot of fun. So this is one side. आपने हाँ में जवाब दिया, उसके रीजंस में आप क्या बोलते हैं? बिकॉज पेरेंट्स आर वेरी लीनियंट, दे डोंट बॉदर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे गिव देम देयर चिल्ड्रन मोबाइल फोन्स, दे यूज देम, दे प्ले मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम्स। एग्जाम्पल आपने अपना दे दिया। व्हेन आई वाज यंग, I had, I often had my mobile phones of my parents and played video games. This is one side. Okay, negative. If you want to say no, no, children are not allowed to use their cell phones in India because parents are very much aware of the fact that mobile phones can have a negative impact on their eyes, on the on the eyes of their children, on their health, and on their studies. So they do not allow them to use their cell phones. You can give your own example. For example, when I was young, my parents never allowed me to touch their mobile phone because they knew that it could affect my eyesight, it could affect my health, and it could affect my studies. These were the two answers, yes may or no may. Now it is time to answer this question diplomatically. इस क्वेश्चन का आंसर डिप्लोमेटिकली कैसे दिया जाएगा? Are children allowed to use cell phones in India? Actually, it totally depends. It depends upon the parents. Some parents are very much aware or cautious about the health of their children. They know that if children would use their cell phones or mobile phones, then it can affect their eyes, it can affect their health, and it can affect their studies.
So they do not allow their children to use their cell phones. When, for example, when I was young, my parents were very strict and they did not allow me to touch their mobile phones ever. But there are certain parents who are really very lenient and they do not bother about anything about the health, about studies, or anything else. They allow their children to use their cell phones as long as they want. For example, my uncle is really very lenient person. He allowed my cousins to have his mobile phone and play mobile games for hours and hours. So it totally depends upon the parents. Some allow and some don't allow. So this is the diplomatic answer of the same question. So now you can see the difference between first, second, and third. One thing is quite clear that if you would answer the question diplomatically, you would be able to score more. But there is only one condition. If you really feel that if you say yes or if you say no, the answer would not be complete. Only then you टेक द डिप्लोमेटिक अप्रोच. अगर आपको लगता है कि हाँ या ना दोनों तरफ से बोलने में आंसर पूरा नहीं होगा, तभी आप डिप्लोमेटिक चाहिए. अगर आपको लगता है कि यस का आंसर देने में बिल्कुल सही है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, देन इट्स ओके. सेम इज विद द नो. पर आपको लगता है कि अगर मैं हाँ कहूंगा या मैं ना कहूंगा ये बात पूरी तरह सच नहीं होगी, then go diplomatically. And I can assure you one thing, give the example, quote the example if you want to improve your score. If you give example in all the questions, answers, you would definitely get better band score. I have improved the score by one band by adopting this technique, and several of my students have also done the same. So I hope that this video will be very useful for you to improve your score or how to answer these questions. And yes, if you think that there is any question you are not able to answer diplomatically, so comment below, I will get back to you. So thank you for staying tuned with me till the end. Don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to this channel if you are new to it. Bye. See you later in the next video.